Everyone. I hope you all can hear me and see me. Good morning, good morning. Thank you, Anilji, for the confirmation. We will be starting the session soon, guys. We'll just wait for our expert to join in and then we'll start with the session. Sir, I have accepted your request. Please join the stage. Good morning, sir. I hope you can hear me clearly. Yeah, good morning, Anuj. I can hear you. Yeah. Great, sir. We'll start in a minute. You can turn on camera, share the screen, and we are good to go. Sure. Good morning, everyone. Welcome to the first morning session and the first session of the week. Today we have our monthly BankX expiry, so don't forget to join in at 2:30 p.m. with our expert Devin sir. Devin sir will be taking up the afternoon session, and then we have Ruchit Jain sir, head of technical research at 11:30 p.m. Stock the stock. So we have these three sessions lined up for today. And for the morning session, we have Mr. Piyush Bora with us. Piyush has given us some amazing intraday calls in the previous sessions, hoping for the same in this session as well, and aiming to book the profits within the session if possible. गुड मॉर्निंग जितने डिटेल्ड आपकी क्वेरीज होंगी गाइस उतने डिटेल्ड हमारे आंसर्स होंगे सो फील फ्री टू आस्क एज डिटेल्ड क्वेरीज एज पॉसिबल विल स्टार्ट विद द इंडेक्स आउटलुक बैंक निफ्टी BankX for Nifty, and then we'll move on to the stocks of the day, and then we'll give you some intraday trades. Over to you, Piyush sir. Okay. Good morning, everyone. So welcome to the morning expiry. So today we have BankX and Midcap monthly expiry. So hopefully in the second half we can see some momentum. So being the last Monday of the month, today we have BankX from BSE and Midcap Select from NSE. So we are having expiry from both the exchanges today, NSE and BSE. So Midcap Select and BankX, both the expiries are there today. So we'll focus there as well. If any opportunity is there, we'll definitely initiate option trade in the morning session itself if any opportunity exists. So yeah, starting from the Nifty. So Nifty is consolidating in a broader range from last 5-6 trading sessions. So if I look at the Nifty chart, you can see Nifty 50 daily chart. So it is hovering in the narrow range of 200 to 300 points. So yeah, 23,600 on the downside and 23,900 on the upside. So ये 300 पॉइंट की रेंज या ब्रॉडर रेंज में निफ्टी लास्ट 6 दिन से हावर कर रहा है. So mainly because of the last today we have tomorrow we are having 31st, so last day of the year. So everyone is on leave. So FIs are normally on leave in the last week of the year. So that is why we are seeing very less momentum and very less activity happening. Volumes are drying as well. So yes, from last 4-5 trading sessions, we are observing that Nifty is trading in a broader range of 300 points. So any close above 23,900 can trigger the up move, or any fresh weakness can be seen below 23,600. So as of now, we are in a no trading zone. You can see in the chart as well. So from last 5 trading sessions, we are hovering in between 23,600 to 23,900. So अगर broader weekly trend पे भी बात करें निफ्टी में, so you can see overall pressure, जो trend है थोड़ा pressure में है. So we can see, so 2 weeks ago we have seen a big bearish candle in the Nifty, wherein Nifty plunged by almost 1,000 points from 24,800 to 23,800. So as of now, broader trend is weak. Immediately trend is sideways. So as of now, we have to wait and watch and wait for any range to break on the upside or downside for taking the fresh cues. So as of now 23,600 के नीचे ही fresh breakdown होगा और 23,900 के ऊपर ही fresh तेजी होगी. So ये range के बीच में wait and watch है. So as of now 23,600 to 23,900 is a wait and watch and range bound area wherein ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी. ये रेंज के अंदर ही चलेगा मार्केट. So talking about the बैंक निफ्टी as well, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन देखा था लास्ट वीक और अभी लास्ट 4 दिन से रेंज में ही चल रहा है. सो एज आई टोल्ड यू, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेंज में ही है बिकॉज ईयर एंड है. सो एक्टिविटीज बहुत कम होती है नॉर्मली इसमें. वेडनेसडे को ओनली इंडियन मार्केट्स आर ओपन, ग्लोबल मार्केट्स आर शट बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर ईव. सो यस, न्यू ईयर पे सब मार्केट्स नॉर्मली क्लोज रहता है, ओनली इंडियन मार्केट्स आर ओपन ऑन वेडनेसडे. सो इसके लिए एक्टिविटीज जो है वो बहुत कम है और वॉल्यूम्स भी बहुत कम हो रही है. सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है.
अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 51,740 ऑन द अपसाइड. So any close above 51,750 can change the immediate trend of the market. So as of now, एक range में ही है वो भी. और on the downside, 50,500 is a support. So repeating again, levels per se in Nifty, 23,600 to 23,900 is the band in Nifty. In Bank Nifty, 50,500 to 51,700 is the band. So Bankex also we are tracking. अगर कोई अच्छा opportunity लगेगा, Bankex में will surely initiate a trade. So as of now, Nifty, Bank Nifty दोनों range में ही है और stock specific action है. So call of the day we have given IPCA Labs. So one can definitely watch out for that for 2 to 3 days perspective. So we have given IPCA as a call of the day. So you can see the chart as well. Nifty Pharma is a continuous uptrend from last 2 weeks, and right now the price is hovering near to 1646. One can keep a stop loss of 1580 and upside target towards 1750. So IPCA Labs, you can print that. Anuj, IPCA Labs is looking good from the pharma space for 2 to 3 days perspective. So IPCA one can buy at current market price, keeping a stop loss of 1580 and target of 1750. So Nifty Pharma is overall holding gains in spite of broader market weakness. If we see the weekly chart from the last 2 weeks only, Nifty Pharma is the one sector which is holding gains and which have shown strength irrespective of the market weakness, because in the times of market weakness, only Nifty Pharma and FMCG defensives play well. So IPCA Labs is looking good. One can buy for 2 to 3 days perspective for conviction delivery idea. Yeah. And it is also a call of the day. So IPCA Lab is looking good. Got it, sir. We have shared it with the Now we can take some stock queries. Sure, sir. Sir, we have to start with NTPC. NTPC overall setup is weak. So you can see on the chart, it is continuously forming low rise, low lows formation. Overall trend is negative. So अभी भी wait करना चाहिए. अगर decisively 345 के ऊपर closing आता है तो setup will change. So buy only about 345, 350 band. As of now, setup is weak and it can also test 310 on the downside. So technically weak setup, wait and watch करना चाहिए level पे. Sir, Indian Hotel 100 quantity at 746. Indian hotels. Yeah, so overall hotel stocks are witnessing fresh buying. We have seen in the last 2-3 weeks hotel stocks में अच्छा action है. Even Indian hotels का setup बहुत ही अच्छा है, lifetime high के आसपास trade कर रहा है. Right now it is hovering in a broader range. 840 के support से one can hold और थोड़ा और follow पाएगा तो it can test the fresh lifetime high above 886 and it can even test 950 zones on the upside. So yes, technically hotel stocks में अच्छा action है because of the New Year Eve. जैसे New Year Eve है तो मैंने last week भी बोला था तो होटल का थीम है, इवन जोमेटो है, स्विगी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है. सो ये पूरा थीम प्ले हो सकता है. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर किसको 1 से 2 वीक के लिए प्ले करना है तो न्यू ईयर थीम ये प्ले कर सकता है. सो उसमें यू कैन सी द लिकर स्टॉक्स, नेमली यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो एक्शन में रहेगा. इवन रेडिको खेतान. सो बोथ द स्टॉक्स फ्रॉम द लिकर स्पेस. होटल्स में इंडियन होटल्स बहुत ही अच्छा है, लेमन ट्री इज गुड, जोमेटो और पेटीएम न्यू एज बिजनेस में बहुत ही अच्छा है. सो ये सब स्टॉक्स पे वन कैन फोकस फॉर 1 to 2 वीक्स न्यू ईयर की ईव के हिसाब से. सो डेफिनेटली इसमें लग रहा है कि अच्छा प्राइस एक्शन भी अच्छा है, टेक्निकली सेटअप इज आल्सो गुड. सो यस, ऑल द स्टॉक्स आर लुकिंग गुड फॉर 1 to 2 वीक्स पर्सपेक्टिव. Sir, K Fintech. K Fintech has already rallied by almost 20-25% in the last week, so we can see the chart as well. बहुत ही क्लीन रैली था K Fintech में. अभी एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन है फ्रॉम द हायर लेवल्स. सो ये लेवल पे भी एंट्री नहीं करना चाहिए. ओवरऑल सेटअप इज वेरी बुलिश. We can see the volume surge when the breakout happened. So technically very strong setup. But after the up move of almost 30% in the last week, थोड़ा सा profit booking decline is visible at current juncture. So yes, 1400 के आसपास risk reward will be favorable. So buy near 1400. Overall technical setup बहुत ही अच्छा है. अगर आपका 2 से 4 महीने का व्यू है, so technically बहुत strong setup है. अगर immediately trading के लिए लेना है तो 1400 के support से buy करना चाहिए. Sir, Hind Petro. हिंद पेट्रो में स्ट्रेंथ था, बट लास्ट 2 दिन से हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने ऑलमोस्ट बेरिंग एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया था. सो यहाँ से हल्का सा और प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन इज विजिबल टुवर्ड्स 390.
सो 390 के आसपास इसको लेना चाहिए. एज ऑफ नाउ सेटअप उतना ग्रेट नहीं है, 390 के आसपास इसको बाय करना चाहिए. तो अगेन स्पीकिंग, अगर कोई सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया अनुज, सो सेक्टर जो एक दो वीक के लिए अच्छा लग रहा है. सो न्यू ईयर ईव के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यू एज कंपनीज है, इवन जोमेटो उसमें स्ट्रेंथ है, न्यू एज में पेटीएम इज लुकिंग गुड, लिकर स्टॉक्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान इज लुकिंग गुड, होटल स्पेस में लेमन ट्री एंड इंडियन होटल्स, ये 5-6 स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं. और कोई सेक्टर है जिसमें स्ट्रेंथ है नॉन स्टॉप फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स, दैट इज निफ्टी फार्मा. सो निफ्टी फार्मा में जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इप्का लैब इज लुकिंग गुड, इवन निफ्टी फार्मा में लुपिंग बहुत अच्छा सेटअप है. सो फार्मा और जो मैंने स्पेस बताया फॉर न्यू ईयर, ये दोनों स्पेस अच्छा लग रहा है फॉर 1 to 2 वीक्स. तो डेफिनेटली उसमें 1-2 वीक के हिसाब से बास्केट के थ्रू प्ले कर सकते हैं. SBI 120 quantity at 866. तो एसबीआई लास्ट अगर 2-3 वीक से बात करें तो लोअर राइज लोअर का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, बट नाउ इट इज हावरिंग नियर द मेजर सपोर्ट लेवल्स ऑफ 780. सो 780 से नॉर्मली स्टॉक हर बार बाउंस होता है, 780 का क्रूशियल सपोर्ट है. तो 780 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए. Zomato. So Zomato 270 से हर बार 270 to 300 का बैंड है, यू कैन सी ऑन द चार्ट. सो लास्ट 2 बार 270 आता है, 270 से ऑलमोस्ट 300 जाता है, वापस 270 आ रहा है. सो ये लेवल्स पे ऐड करने का लेवल जो ऑलमोस्ट ऊपर से फ्रॉम द हाइज ऑफ 304 अभी 272 के आसपास चल रहा है. सो अच्छा लेवल है. यहाँ पे 260 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. सो इमीडिएट में वन कैन बाय कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 260 एंड अगेन इट कैन टेस्ट द फ्रेश हाइज ऑफ 305. सो टेक्निकली सेटअप बुलिश है. जो अच्छा स्टॉक है जिसमें स्ट्रेंथ है उसको ही डिक्लाइन में बाय करना है. सो अभी मार्केट में वही वर्क कर रहा है. सो यस, जोमेटो पेटीएम दोनों में स्ट्रेंथ है और डेफिनेटली इसको डिप्स पे ऐड करना चाहिए. Sir, ICICI. So ICICI Bank or ICICI Lombard? They have just written ICICI. Let's take bank. Okay, so I'll take both the stocks. So ICICI Bank सेटअप ओवरऑल अच्छा है. मार्केट की वीकनेस की बात में स्टॉक होल्ड कर रहा है, बट मोमेंटम नहीं है. सो जो मोमेंटम है वो 1350 के ऊपर आएगा, दैट इज द ब्रेकआउट जोन. सो 1350 के ऊपर एंट्री विल बी कंफर्टेबल इन ICICI बैंक. अगर ICICI लोम्बार्ड की बात करें, ICICI GI, सो ICICI लोम्बार्ड एक वीक सेटअप है. सो ये लेवल पे इग्नोर करना चाहिए. और यहाँ पे नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं. सो इट कैन टेस्ट 1720 ऑन द डाउनसाइड. सो ICICI बैंक इज ओवरऑल होल्डिंग गेन्स और स्ट्रेंथ है उसमें. ICICI लोम्बार्ड वीक सेटअप है, उसको इग्नोर करना चाहिए एट करंट मार्केट प्राइस. One stock which is looking good for intraday, so you can pin that, Graphite India. So right now the price is hovering near to 575. So stock is giving the range breakout on the daily chart. Last 3 वीक का जो रेंज है वो निकल रहा है स्टॉक में. So technically बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है. 575 पे इसको बाय करना चाहिए, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 565 और अपसाइड जो टारगेट है वो 595 का रहेगा. So you can pin that, Anuj. Graphite India is looking good for intraday, keeping a stop loss of 565 and target of 595. Yeah. So उसका डेली चार्ट है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट. अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं इन 10 मिनट चार्ट, तो यू कैन सी ये 15 मिनट्स का चार्ट है. सो वॉल्यूम्स भी सपोर्टिव है और जस्ट रेंज निकला है लोअर टाइम फ्रेम में भी. सो टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप फॉर इंट्राडे. सो डेफिनेटली इंट्राडे 2 से 3% स्विंग के लिए इसको बाय करना चाहिए. yes. Sir, Paytm for intraday. या पेटीएम मोमेंटम एज ऑफ नाउ इंट्राडे के लिए उतना अच्छा दिख रहा नहीं है, बट यस ओवरऑल सेटअप बहुत ही अच्छा है. लोअर स्टॉक नॉन स्टॉप हाई राइज हाई लो बना रहा है फ्रॉम द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस. जो प्रीवियस हाइज है वो 1062 के है. अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो लास्ट 6 से 7 महीने में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा अपमूव दिखाया. सो वी कैन सी पेटीएम फ्रॉम द लोज ऑफ 310 अभी 1020 चल रहा है, ऑलमोस्ट 4x हो गया नीचे के लेवल से. सो टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप फॉर शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू. अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मंथली चार्ट पे भी सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है. तो इंट्राडे चार्ट में अगर बाय करना है तो इंट्राडे चार्ट में पेटीएम का जो सपोर्ट है वो 1005 के आसपास रहेगा. 1005 के सपोर्ट से इंट्राडे पेटीएम बाय कर सकते हैं. ज्यादा मोमेंटम जो रहेगा वो 1025 के ऊपर आएगा. सो अगर इंट्राडे पेटीएम को बाय करना है तो बाय अबाउट 1025 वेयरिंग मोमेंटम विल बी मोर. सो वन कैन बाय इफ इट सरपासेस 1025. Sir, your view on Gale.
एज ऑफ नाउ वीक सेटअप, वेट फॉर इट टू सरपास एंड होल्ड अबव 130. सो 130 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए. So you can see some action in graphite, Anuj. So you can pin that 575 वाला. Right now the price is trading near to 581. So a quick move of 1%. इसमें और स्ट्रेंथ लग रहा है. थोड़ा जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर ट्रेल कर सकते हैं. So उसको 565 की जगह 570 पे ट्रेल कर सकते हैं. So yes, one can trail the stop loss at 575 और उसको होल्ड रखना चाहिए. अभी 583 के आसपास 582 चल रहा है. So क्विक जिसको अगर 1.5% का भी गेन अपने प्राइस से क्विक गेन बुक करना तो बुक भी कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट को ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं. So Zomato जैसे मैंने आपको बताया कि बुलिश हुआ है, 270 के आसपास चल रहा है, 260 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. सो यस 260 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए. सर मारुति ओवरऑल एक डाउनट्रेंड में ऑटो स्टॉक्स में हमने देखा है कि इन लास्ट 2 मंथ्स वी हैव सीन सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द हायर लेवल्स. सो यस एज ऑफ नाउ भी सेटअप वीक है. सो निफ्टी ऑटो में मारुति में वीकनेस है, अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए. अगर ऊपर में 11,400 निकलता है तो ही बाय करना चाहिए. अगर ऑटो स्पेस में कुछ बाय करना है, सो विद इन ऑटो स्पेस ज्यादा स्ट्रेंथ एमएनएम में है. सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द ऑटो स्पेस, एमएनएम इज शोइंग मोर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली, और एमएनएम पे फोकस करना चाहिए. सर जीआईसीआरई GICRE overall setup is bullish, so stock has given a major breakout few days ago with the noticeable volume. So very noticeable volumes और सर्च था वॉल्यूम में एकदम. उसके बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बट ओवरऑल सेटअप इज बुलिश. सो और थोड़ा डिक्लाइन आएगा टुवर्ड्स 450 कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो टेक्निकली सेटअप इज स्ट्रांग, वन कैन बाय नियर 450 लेवल्स और ऊपर में वापस 500 के लेवल्स आने चाहिए स्टॉक में. सो टेक्निकली सेटअप स्ट्रांग है और इसको बाय करना चाहिए. So CIE India short term view, please. CI इंडिया भी सेटअप इज वीक. सो अभी तक कोई भी ऊपर के लेवल सरपास नहीं कर पा रहा है. 510 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ है. ये लेवल पे भी इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए. टेक्निकली सेटअप वीक है. Sir, your view on IRIDA? One second. So IRIDA as of now setup is weak. So अभी तक नीचे में 185 के लेवल जा सकते हैं स्टॉक में. अभी तक कोई मेजर स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रहा नहीं है. सो ये लेवल पे भी वेट एंड वॉच करना चाहिए और 220 के ऊपर ही फ्रेश बाय करना चाहिए. सो एज आई टोल्ड यू, ब्रॉडर मार्केट जो है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस जो है, एज ऑफ नाउ उतना एक्शन नहीं है. सब में ओवरऑल वीकनेस ही है, साइडवेज टू नेगेटिव व्यू है सब में. सो अभी तक वेट एंड वॉच करना चाहिए. और फॉर निफ्टी अगर कोई मेजर बाइंग ब्रॉडर मार्केट स्टॉक, सो निफ्टी में टेल यू द लेवल, वो लेवल अगर सरपास करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेंथ है निफ्टी में. सो एज ऑफ नाउ जैसे मैंने बताया, इमीडिएट में 23,900 का लेवल था. सो ओवरऑल 24,100 इज अ मेजर लेवल फॉर निफ्टी. 24,100 के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है सरपास करके तो ही ब्रॉडर मार्केट में एक्शन आएगा. बट एज ऑफ नाउ जो इमीडिएट ट्रेंड है वो साइडवेज टू नेगेटिव है. सो वन कैन कीप दैट इन माइंड और अकॉर्डिंगली लेवरेज करना चाहिए. और ये लेवल पे अग्रेसिवली लेवरेज नहीं करना चाहिए इन ब्रॉडर मार्केट. सो बेसिकली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में अग्रेसिवली लेवरेज पे बाय नहीं करना चाहिए लेवल पे, बिकॉज जो मार्केट में है उतना ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं, ओनली सेलेक्टिव फार्मा इज होल्डिंग. सो अगर फार्मा होल्ड कर रहा है इसका मतलब है कि मार्केट सेल साइड पे नेगेटिव मोड में, दैट इज व्हाई डिफेंस कम्स इनटू पिक्चर. सो यस, ये लेवल पे अग्रेसिवली लेवरेज के थ्रू प्ले नहीं करना चाहिए इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स. सो निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स बता दिया है. बैंकेक्स में ऐसा कोई एज ऑफ नाउ ट्रेड नहीं है, एक रेंज में चल रहा है मार्केट. सो बैंकेक्स साइड पे भी उतना कोई मेजर ट्रेंड नहीं है एज ऑफ नाउ. या
We can take few more stock prices. Sir, Bhel. बेल ओवरऑल वीकनेस है अभी तक ऑन द अपसाइड. अगर 245 निकलता है तो इसमें नया एंट्री लेना चाहिए. ये लेवल पे इसमें भी वेट एंड वॉच चाहिए. बाय ओनली अबाउट 245. Sir, your view on MCX and BSE short term and mid term? Yeah, so पूरा जो एक्सचेंज का थीम है, it is played out well. So we can see on the chart as well. You can see MCX का चार्ट है. 50 EMA भी तोड़ रहा नहीं है. हर बार स्टॉक 50 मूव डेज के मूविंग एवरेज के बीच में आता है, तभी वहां से बाइंग आ जाती है. सो MCX का ओवरऑल इमीडिएट व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू, मीडियम टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू सब में स्ट्रेंथ है. और स्लो एंड स्टडी ये 10,000 के लिए रेडी हो रहा है. सो अगर बड़े फ्रेम की बात करेंगे वीकली मंथली पे, सो लाइफ टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक और एवरी स्मॉल डिक्लाइन इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी. ये पूरा थीम ही प्ले आउट हो रहा है. सो नेमली MCX है, CDSL है, BSE है, जो केफिन टेक है, केन्स है, ये पूरा का पूरा जो एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी रिलेटेड थीम है, इट इज प्लेइंग वेल और बहुत ही अच्छा प्ले हो रहा है फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स. और गोइंग फॉरवर्ड आल्सो मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू. सो यस, MCX, CDSL, BSE ये पूरे के पूरे थीम में थोड़े भी डिप्स आते हैं अगर 8-10% के, तो दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट आने चाहिए इसमें एज पर द टेक्निकल सेटअप. सो यस, पूरा एक्सचेंज का थीम टेक्निकली इट इज लुकिंग गुड. Coal India. कोल इंडिया सेटअप वीक है, ये लेवल पे भी अवॉइड करना चाहिए. सो कोई भी लेवल पे बाउंस आ रहा नहीं है. ओवरऑल सेटअप इज वीक. 400 के ऊपर ही इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए. टेक्निकली सेटअप वीक है. So Glenmark for intraday. या ग्लेनमार्क टेक्निकली सेटअप अच्छा है. इंट्राडे के लिए देख सकते हैं जस्ट रेंज निकल रहा है स्टॉक में. सो आई विल टेल द लेवल्स फॉर इंट्राडे. 1580 का लेवल है. सो 1580 का सपोर्ट है फॉर इंट्राडे. ऊपर में 1630 1635 आ सकता है. सो इंट्राडे के लिए 1580 के सपोर्ट से वन कैन वॉच आउट फॉर ग्लेनमार्क. Sir, Nuvama. NUVAMA. ग्रीन में चल रहा है, हल्का सा फॉलोअप चाहिए. ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बहुत ही अच्छा है. स्टॉक इज होल्डिंग गेन्स एंड हावरिंग एट हायर जोन्स व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन. थोड़ा सा फॉलोअप आएगा 7000 के ऊपर तो स्टॉक कैन टेस्ट प्रीवियस हाइज ऑफ 7600 एज वेल. सो टेक्निकली स्ट्रांग सेटअप. थोड़ा सा फॉलोअप चाहिए अबाउट 7000 व्हिच कैन टेक इट टुवर्ड्स द प्रीवियस लाइफ टाइम हाई ऑफ 7600. सो यस, टेक्निकली सेटअप इज गुड. Sir, can I enter Graphite for intraday now? तो 576 के आसपास से वापस सेम बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 575 का अपन बाय किया तो यस, ये लेवल पे वन कैन बाय. अगर एंट्री नहीं किया है तो बाय कर सकते हैं ये लेवल पे. 565 का जो सपोर्ट था उसको अपन ने ट्रेल कर दिया था आगे 570 के आसपास. सो 570 के सपोर्ट से इसको होल्ड कर सकते हैं. Sir, Inox Wind. Inox Wind ओवरऑल सेटअप इज वीक, लेकिन मेजर जो ब्रेकआउट था वो रिटेस्ट किया स्टॉक ने. सो ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है. सो 175 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. 175 के सपोर्ट से इसको होल्ड रखना चाहिए. So CDSL किस रेट में एंट्री ले सकते हैं? अगर आपका व्यू CDSL पे ऊपर से वी कैन सी इन लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशंस अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन था. मेजर जो ब्रेकआउट जोन था स्टॉक का वो 1675 है. सो 1675 से 700 इज अ गुड एंट्री पॉइंट. सो 1675 से 1700 ये बैंड के आसपास एंट्री लेना चाहिए, जो बहुत ही अच्छी एंट्री होगी फॉर CDSL. Sir, Hindustan Copper. हिंद कॉपर वीक सेटअप है. सो ओवरऑल मेटल पैक में हमने देखा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन इज इंटैक्ट. और पूरा का पूरा जो पैक है उसमें लास्ट 2 महीने में हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग ही आ रहा है. सो यस, मेटल पैक एज ऑफ नाउ वीकनेस है निफ्टी मेटल्स में. सो ये लेवल पे कॉपर को भी अवॉइड करना चाहिए. सो टेक्निकली वीक सेटअप है.
सो निफ्टी मेटल में वीकनेस है और मेटल स्टॉक्स को एज ऑफ नाउ फॉर ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए. Sir, HDFC Bank. HDFC बैंक ओवरऑल स्ट्रेंथ है, नीचे में 1760 का मेजर सपोर्ट है, बट मोमेंटम इज मिसिंग. सो जैसे मैंने आपको बताया फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में हावर कर रहे हैं. सो एज ऑफ नाउ फ्रंटलाइन स्टॉक्स नेमली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, लार्सन, आईटीसी, ये सब जो ब्रॉडर टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक्स में हल्का सा एक साइडवेज मोमेंटम है, बिकॉज ऑफ इट वी कैन सी ज्यादा एक्शन नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में. So one more stock which is looking good for intraday, you can in that that will be the last intraday trade from our side, that is Laurus Lab. So Laurus, जैसे मैंने आपको बताया निफ्टी फार्मा पूरे पैक में बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है. Laurus Lab ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली सेटअप बहुत ही अच्छा है. So right now the price is putting near to 594. So one can keep the stop loss of 585 and one can hold Laurus for the upside target towards 610. So one can buy Laurus for intraday as well, keeping a stop loss of 585. So you can think that Laurus from the pharma space is looking good for intraday. Yeah. Got it, sir. We'll So take two more queries and then we'll end the session, sir. First is Indian Cement. Indian Cement overall setup is good. So technically setup strong है Indian Cement में. 385, 390 के ऊपर निकलेगा तो और ही अच्छा आपको आना चाहिए. So technically strong setup और strength है stock में. And so the last query will be, are there any new sectors that we can look for fresh buy considering the new year? So जैसे मैंने already बताया, so जो sectors है वो liquor space, hotel जो है hotel space है, new age companies है. So new age companies are looking good. So namely उसमें मैंने already बता दिया Paytm and Zomato. एक Indigo को भी ऐड कर सकते हैं. Even Indigo can be a beneficiary new year के हिसाब से. So Indigo भी एक beneficiary हो सकता है. So I have listed 5 to 6 stocks which are looking good. That is Indigo है, Zomato है, Paytm है, hotels में Lemon Tree and Indian Hotels है, liquor space में Redico, Khaitan और United Spirits है. So these all these 6-7 stocks are looking good और ये play कर सकते हैं for new year. So that will be all for the morning session. Thanks a lot for joining in. Thank you everyone for joining in. We have shared 2 intraday trades and 1 CDI trade, that is Ipca Lab for CDI and Graphite India and Laurus Lab for intraday. Yeah. Okay, thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Don't forget to join us session at 11:30 AM and then at 2:30 PM. Thank you everyone.